Assalamu alaikum. My name is Nayab and the topic we are going to discuss is paragraph writing. Starting with what a paragraph is. So a paragraph is a subdivision of written composition that consists of one or more sentences and deals with one point. Or a paragraph is a unit of writing in a larger body of work. A paragraph expresses a particular topic or theme. Or to put it more simply, a paragraph is defined as a group of linked or related sentences that expresses one main idea. पैराग्राफ में हमारे पास सिर्फ एक ही मेन आइडिया को हम डिस्कस कर सकते हैं एक पैराग्राफ में. अगर हमें कोई दूसरा आइडिया डिस्कस करना है सो वी हैव टू राइट एन अदर पैराग्राफ फॉर इट. अब पैराग्राफ इज़ अ यूनिट ऑफ राइटिंग इन अ लार्जर बॉडी ऑफ वर्क. फॉर एग्जांपल वी हैव एन एसे. तो ऐसे में हमारे पास सेवरल पैराग्राफ्स होते हैं एंड ईच पैराग्राफ एक्सप्रेसेस अ पर्टिकुलर टॉपिक और थीम. एक पैराग्राफ सिर्फ एक ही टॉपिक या थीम को एक्सप्रेस करता है. Structure of a paragraph. The structure of a paragraph parallels the structure of an essay in order as well as content. अब जिस तरह से हमारे पास ऐसे का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे में फर्स्ट हमारे पास मेन आइडिया हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद सेवरल पैराग्राफ्स में हम जो है तो उस जो सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं वो लिखते हैं एंड इन द लास्ट हमारे पास कंक्लूजन पैराग्राफ होता है विच कंक्लूड और समराइजेज एवरीथिंग दैट वी हैव रिटन इन दैट एसे. तो इसी तरह हमारे पास पैराग्राफ का भी स्ट्रक्चर होता है. पैराग्राफ में भी हमारे पास पहले टॉपिक सेंटेंस होता है, फिर उसके बाद सपोर्टिंग एविडेंस और एनालिसिस एंड देन कंक्लूजन. Both contains a coherent argument, supporting evidence and a conclusion. Specifically, the content of a paragraph are as follows. The topic sentence. टॉपिक सेंटेंस में हमारे पास जो मेन आइडिया हमारे पास होता है उस पैराग्राफ का वो लिखते हैं. हमारे पास सपोर्टिंग एविडेंस और एनालिसिस आता है. फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सपोर्टिंग बॉडी. जो भी हमारे पास टॉपिक सेंटेंस में हमने आइडिया डिस्कस किया है उसको सपोर्ट करने के लिए फिर हम सपोर्टिंग बॉडी लिखते हैं या एविडेंस लिखते हैं, फैक्ट्स लिखते हैं एंड इन द एंड वी हैव अ कंक्लूजन विच समराइजेज द आइडिया दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दैट पैराग्राफ. नाउ द टॉपिक सेंटेंस needs to state one idea clearly. As we have said that each paragraph expresses one main idea. तो हमारे पास हर एक पैराग्राफ सिर्फ एक ही आइडिया को डिस्कस करता है and we have to state that clearly. Useful tip is that always put the most important information first. हमारे पास अब एक टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास सेवरल एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वी हैव टू पुट दैट फर्स्ट. एंड टॉपिक सेंटेंस हमारे पास मोस्टली बहुत हम टॉपिक सेंटेंस जनरल लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल माई होम टाउन इज़ फेमस फॉर सेवरल अमेजिंग फीचर्स. नाउ दिस इज़ द टॉपिक सेंटेंस ऑफ आवर पैराग्राफ. ये हमारे पास टॉपिक सेंटेंस हो गया और ये बहुत जनरल है. हमने डिस्कस नहीं किया है इस सेंटेंस में कि वो जो है तो फीचर्स कौन से हैं या कितने फीचर्स हैं. हमने ऐसी कोई भी बात नहीं की. वी जस्ट सेड दैट माई होम टाउन इज़ फेमस फॉर सेवरल अमेजिंग फीचर्स. अब हमारे पास टॉपिक सेंटेंस जनरल तो होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा जनरल भी नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल क्लाउड्स आर वाइट, क्योंकि हमारे पास टॉपिक सेंटेंस जो होता है रीडर की अटेंशन कैच करने के लिए होता है. अगर टॉपिक सेंटेंस हमारा बहुत ज़्यादा जनरल होगा तो रीडर जो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ के ही बोर हो जाएगा एंड ही वुडंट कंटिन्यू हिज रीडिंग फर्दर. द टॉपिक सेंटेंस सर्व्स टू फंक्शंस. हमारे पास टॉपिक सेंटेंस के टू फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट इट फंक्शंस एज द थीसिस ऑफ योर पैराग्राफ. थीसिस मीन्स इट फंक्शंस एज द टू एक्सप्रेस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ. के हमारे पास जो पैराग्राफ है वो किस चीज़ के बारे में है, मेन आइडिया क्या है हमारे पैराग्राफ का. एंड सेकेंड इट पुशेस द थीसिस ऑफ योर एसे फॉरवर्ड एंड प्रेजेंट्स एन आर्ग्यूएबल पॉइंट. हमारे पास एक आर्ग्यूएबल पॉइंट देता है जिसको हम फर्दर उस पॉइंट पे आर्ग्यू कर सके, फैक्ट्स दे सके, एविडेंस दे सके उस बारे में. Supporting evidence and analysis, which is also known as supporting body of the paragraph, it elaborates and explains the idea introduced in the topic sentence. अब हमारे पास जो टॉपिक सेंटेंस है उससे रिलेटेड फैक्ट्स और फिगर्स हम जो है तो सपोर्टिंग एविडेंस या एनालिसिस में देते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव सेड दैट ओरल रूट इज़ द सेफेस्ट वे फॉर अ मेडिकेशन टू बी डिलीवर्ड. तो हमारे पास अब ओरल रूट हमने कहा है कि सेफेस्ट वे है मेडिकेशन देने के लिए. ये तो हमारा हो गया टॉपिक सेंटेंस. नाउ वी हैव टू प्रोवाइड एविडेंस कि क्यों हमारे पास सेफेस्ट वे है. हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स हम देंगे कि
रिसर्च हुई है या कोई किसी आर्टिकल में किसी ने कहा है। इसी तरह हम जो है तो सेवरल सेंटेंसेस लिखेंगे इसके बारे में उस हमारे टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए। इट प्रोवाइड्स एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेन्स द एविडेंस और एग्जाम्पल इंक्लूडेड दैट वाई इज़ इट रेलिवेंट। और हमारे पास हम जो एग्जाम्पल्स देंगे या फैक्ट्स देंगे उसको एक्सप्लेन भी करेगा कि ये क्यों रेलिवेंट है हमारे टॉपिक सेंटेंस के साथ। यू नीड टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन एविडेंस यू प्रोवाइड, फैक्ट्स, कोटेशन, समरी ऑफ इवेंट्स एंड एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द एविडेंस। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पैराग्राफ को हम बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमारे पास बैलेंस होना चाहिए एविडेंस जो हम प्रोवाइड करेंगे और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन में। एंड देन कंक्लूजन, हमारे पास कंक्लूजन सेंटेंस लास्ट में आता है। इट मेक्स लिंक्स बैक टू द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, बैक टू द रिसर्च क्वेश्चन और टॉपिक ऑफ द असाइनमेंट टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। यूजुअली कंक्लूजन सेंटेंस हमारे पास जो टॉपिक सेंटेंस होता है उसको रिवर्स ऑर्डर में ही लिख लेते हैं हम। द कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन क्लोजेज योर पैराग्राफ विद एन ऑब्जर्वेशन दैट इज़ मोर देन जस्ट समरी ऑफ द कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ। और कंक्लूडिंग जो हमारे पास सेंटेंस होता है, इट समराइजेज the whole information that we have written in that paragraph। एंड सिर्फ उस पैराग्राफ की समरी ही नहीं होती कंक्लूडिंग सेंटेंस में, बट जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है हमारे पास फर्दर नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ पैराग्राफ को लिंक भी करता है। The following paragraph has been broken down into its constituent parts. The topic sentence, the means by which environmentalists seek to achieve their political goals demonstrate a willingness to operate within traditional political channels. Point arguable is that some people may believe environmentalists largely use anti-democratic strategies. अब हमारे पास टॉपिक सेंटेंस में लिखा हुआ है कि environmentalists use democratic strategies। अब हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, कुछ लोग इसके साथ एग्री करेंगे, कुछ लोग इसके साथ एग्री नहीं करेंगे। ये तो हो गया हमारा टॉपिक सेंटेंस। नाउ वी हैव टू प्रोवाइड डिटेल्स एंड सपोर्टिंग एविडेंस के क्यों हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों ऐसा है कि एनवायरमेंटलिस्ट पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। लाइक मैनी अदर स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स, advocates for the environmentalist movement use lobbying tactics such as contributing financially to the campaigns of the environmentally friendly candidates. Lobbying provides a source of political influence and power. As one analyst of the environmental politics note, in making some commitment to work within the political system, environmental lobbying groups succumb to pressure to play by the rules of the game in the compromise world of Washington, D.C. Now here we have provided evidence and analysis कि जो हमारे पास स्पेशल ग्रुप्स हैं या जो एडवोकेट्स हैं फॉर एनवायरमेंटलिस्ट, दे यूज़ लॉबिंग टेक्निक्स, सही है। और हमारे पास सर्टन हमने जो है तो किसी आर्टिकल से हमारे पास हमने सपोर्टिंग एविडेंस भी ली है। इट इज़ नोन एज द सपोर्टिंग बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। नाउ कंक्लूजन, some might argue that environmentalists have taken a distinctly anti-American approach to policy change, claiming that lobbying is inherently undemocratic in its bias towards certain segments of the population. However, lobbying remains a constitutionally legitimate form of political activism. Now हमारे पास जो ये लास्ट सेंटेंस है, इट इज़ द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। इसमें फिर हमने पैराग्राफ की कंक्लूजन की है दैट लॉबिंग इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनली लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविज़म। एंड जो हमारे पास जो एनवायरमेंटलिस्ट के एडवोकेट्स हैं वो हमारे पास लॉबिंग यूज़ करते हैं, इसीलिए हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एनवायरमेंटलिस्ट जो है तो वो डेमोक्रेटिक या जो पॉलिटिकल अप्रोच है वो यूज़ करते हैं। Now it is more than just a summary. The point is arguable and could easily lead to another point. अब हमारे पास हम further next paragraph जो है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, which would be linked to this previous paragraph. Types of a paragraph. According to the writing purpose, paragraphs may be classified into 4 main categories. Now जो पिछला हमने पढ़ा है उसमें there can be several types of MCQs. For example, कि हम MCQs आ सकता है that which sentence is known as the thesis of the paragraph, या फिर हमारे पास सेंटेंस आ सकता है कि कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है तो हमारे पास वो
फर्स्ट में आता है या लास्ट में आता है। तो इस तरह के सेवरल MCQs हमारे पास बन सकते हैं। टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, दे मे बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। दोज आर डिस्क्रिप्टिव, persuasive, expository and narrative. To describe something or someone, it is known as descriptive paragraph. To tell stories or sequence of the events, it is known as narrative paragraphs. And to explain something, give information or instruction, it is known as expository paragraph. And to convince the reader, so it is known as persuasive paragraph. Descriptive paragraph. Descriptive paragraphs aim to show the reader what a thing or a person is like without physical contact. Allow the reader to experience the phenomena, item or event described in detail. Descriptive paragraph में हम एक चीज़ की description देखते हैं जो कि हमारे पास reader देख तो नहीं सकता या फिज़िकल कांटेक्ट तो नहीं होती उस चीज़ के साथ, लेकिन हम जो है तो वर्ड्स के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं उस चीज़ को। फॉर एग्जांपल, एज अ चाइल्ड एट द एज ऑफ 2, माई सिस्टर एंड आई हैड पिक्चर्स टेकन टुगेदर. माई सिस्टर एंड आई आर 10 months and 3 weeks apart. In this special family picture, we look identical. Our big dark blue and brown eyes and smile resemble 2 calm little girls enjoying the moment with peaceful smiles on our face. Now here the writer has given a description of her and her sister's picture at the age of 2. अब हम जो रीड कर रहा है फिज़िकल कांटेक्ट तो नहीं है उस पिक्चर के साथ, ना ही वो देख सकते हैं उस पिक्चर को, बट द राइटर इज़ प्रोवाइडिंग अ डिस्क्रिप्शन कि वो पिक्चर कैसे ली गई थी एंड उसमें वो और उसके सिस्टर बिल्कुल आइडेंटिकल लग रहे हैं। इन आवर लॉन्ग डार्क रेड एंड ब्लू ड्रेसेस वी सिट स्ट्रेट अप इन फ्रंट ऑफ अ warm red fireplace surrounded by green plants. Our dark brown wavy hair even matched. We both had baby pink bows off to the side of our heads that resemble a blooming flower. Growing up, our family consisted of our father, my sister and I. My sister and I have both been there for each other through the thick and the thin. My photograph of my sister reveal how close we are in age, and through this paragraph it also reveals how close we are when it comes to love and friendship. Now this paragraph describes the relationship of the writer and her sister. Narrative paragraph. Narrative paragraph aim to tell about a sequence of actions. Their feature are there is always a clear beginning, middle and the end, and they usually follow a plot line. नरेटिव पैराग्राफ हम नरेशन में मोस्टली कोई स्टोरी बताते हैं। सो इसके स्टोरी की हमारे पास बिगिनिंग भी होती है, मिड भी होती है एंड एंड भी होता है। दे यूजुअली फॉलो अ प्लॉट लाइन। हमारे पास एक स्पेसिफिक प्लॉट होता है कि स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई, फिर क्या हुआ एंड देन एंड कैसे हुई, ख़त्म कैसे हो गई। फॉर एग्जांपल, इट वाज जुलाई 21, 1969 एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग अवोक विद अ स्टार्ट. इट वाज द डे ही वुड बिकम द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू एवर वॉक ऑन द मून. The journey had begun several days earlier when on July 16 the Apollo 11 launched from Earth headed into outer space. On board with Neil Armstrong were Michael Collins and Buzz Aldrin. The crew landed on the moon in the Sea of Tranquility a day before the actual walk. Upon Neil's first step onto the moon's surface, he declared, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." It sure was. Now in this paragraph, इस पैराग्राफ में हमारे पास स्टोरी बयान की गई है नील आर्मस्ट्रॉन्ग की कि कैसे उसने मून पे पहला कदम रखा। सो इट हैज़ अ स्टार्ट, कि स्टार्ट कहाँ से हुई, फिर दरमियान में क्या हुआ एंड एंड है कि फिर एंड में हमारे पास क्या हो गया। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ. एक्सपोजिटरी पैराग्राफ एम्स टू help the reader understand following a process or method. As we have said, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ में हमारे पास इंस्ट्रक्शन या प्रोसीजर किसी चीज़ की बयान की गई होती है. सो इट हेल्प्स द रीडर अंडरस्टैंड फॉलोइंग अ मेथड और अ प्रोसेस. प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ईदर एक्सप्लेनिंग इट और गिविंग इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं या इंफॉर्मेशन दी गई होती है. दे ऑफन रिक्वायर रिसर्च एंड एक्सपोजिशन यूजुअली इंक्लूड्स techniques such as examples or illustrations to support a statement. For example, हमारे पास expository paragraph में हम अगर कोई पैराग्राफ लिख लेते हैं about IV cannulation,
तो हम उसमें लिखेंगे कि IV कैनुलेशन कैसे करनी चाहिए। तो हम उस जो हमारे पास प्रोसीजर है उसके स्टेप्स लिखेंगे या इंस्ट्रक्शंस देंगे कि जो रीडर हो उसको समझ आ जाए वो प्रोसीजर के कैसे करना है। Example, this invention brings forth a new era that permits the user to drive in complete luxury without need to focus on the manual control of the automobile. By implementing driverless cars, we can finally control the roadways in a safe and efficient manner. This invention will result in some of the greatest societal growth in the human history. अब इस पैराग्राफ में हमारे पास जो ड्राइवरलेस कार्स है उनके बारे में बताया गया है। उनके बारे में हमें बताया गया है, मतलब रिसर्च करके बताया गया है कि हाउ दे वुड बी हेल्पफुल फॉर द मैनकाइंड। And persuasive paragraphs aims to get the reader reaction, accepting or understanding the writer's position or proposal, and they often require the gathering of facts and research. Now persuasive paragraph में हमारे पास जो राइटर है वो जो रीडर होता है उसको परसुएट करता है, वो आर्ग्यू करता है या फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है तो जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो आर्ग्यू करता है कि जो उसने लिखा है वो ठीक लिखा है, एंड ही हैव टू परसुएट द रीडर कि वो उसके साथ एग्री करें। एग्जाम्पल हमारे पास है द के स्कूल समर कार्निवल इन जनवरी इज़ अ स्पेशल इवेंट एवरीवन शुड अटेंड। नाउ हमारे पास इसमें फर्स्ट में ही लिखा गया है दैट एवरीवन शुड अटेंड। नाउ व्हाई दे शुड अटेंड, द राइटर has to persuade the reader. First of all, there are activities for everyone. This year, one classroom had games for little kids. Another room painted a clown with a huge mouth on a board. Other rooms had shoe scrambles and rally races. Now, हमारे पास राइटर ने फर्स्ट सेंटेंस में लिख लिया that the summer carnival in January is a special event that everyone should attend. Now, why should everyone attend? आगे पैराग्राफ में उसने सर्टन जो है तो फैक्ट्स या आइडिया सर्टन फैक्ट्स लिखे हैं जो उसके फर्स्ट सेंटेंस को